mom wanted to do something. She was getting bored, so we just thought to make something together. So she's gonna be guiding me, but not tell anyone. Usually palak paneer बनाते समय we feel कि it's gonna be very expensive, बहुत महंगा हो जाएगा. तो we're gonna make something really जो घर पे चीज़ें होती है उससे ही हम बनाएंगे. And अगर आप चाहो तो उसमें मटर भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं और पनीर भी डाल सकते हैं थोड़ा घी या ऑयल में सौते करके. But today we're gonna just make plain gravy of boiled palak. So let's go. जो पानी में हमने पालक को बॉईल किया था वो पानी है. यूजुअली इसको स्टॉक बोलते हैं. एंड वो बस ओके. सो इसमें जाएगा सीरा. अब इसमें जाएंगे प्याज. पिंक करेंगे, ज्यादा हम पकाएंगे नहीं वरना कड़वा टेस्ट आएगा. Okay, so this is लहसुन अदरक का पेस्ट made by the Mother India. इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जा चुका है जिसे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी कहते हैं. उसमें ही एक्चुअली मिर्ची भी एडेड है. सो मिर्ची का पेस्ट अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट घर पे बिना मिर्ची के बनाते हैं तो यू हैव टू मेक अ पेस्ट. आप खुली मिर्ची भी डाल सकते हैं कट कर वो नॉर्मल मिर्ची होती है वो, या तो उसको अदरक लहसुन के साथ ग्राइंड करके डायरेक्ट. Tomato. So ये जो स्टॉक है, जो पानी है जिसमें हम लोगों ने पालक उबाला था वो हम डाल रहे हैं थोड़ा सा, so that मसाला जलेगा. स्वाद अनुसार. ओके, सो अब हम मसाले को पकने देंगे थोड़ी देर. इसको ग्राइंड कर देंगे.
चिली का यूज करेंगे तो इसका भी बेटर। ये इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो जब थोड़ी सी ये पक जाएगी तब हम ये डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये करी थोड़ी सी थिक हो रही है, तो जो आपका स्टॉक है जिसमें आपने पालक को उबाला है उसको भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, जैसे कि, और इसको आप पी भी सकते हैं, गुड फॉर बॉडी। इसमें सॉल्ट ऑलरेडी एडेड है। ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। लेट्स जस्ट कुक इट फॉर मोर लाइक 2-3 minutes and we are good to go. It's good. अब हम इसको सर्व करेंगे। Alysha's Kitchen. Until next video, stay tuned. Alysha's Kitchen with mommy behind the kitchen door.